Hello and welcome to Ignited Minds. Today in this discussion, there is a most important news article which we are going to discuss. It's about Iran and Israel and the Hamas leader. The Hamas leader was in Tehran on the Tuesday night, and there he got killed by Israel. And till this date, there is no such statement from Israel itself. But yes, the faction Hamas, its military group, has sent this statement that our chief or the prime leader of Hamas organization, Mr. Haniyeh, and who was this Haniyeh and why was he killed in Israel? This Iran and particularly और ईरान में ही क्यों मारा गया और ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है दैट ही वाज killed and his martyrdom will not be wasted, the blood will not go to waste. Now the point here is यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट आ रहा है दोनों साइड से. इसराइल का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है बट ईरान और हमस की लीडरशिप इन इटसेल्फ both are claiming the death of the Mr. Haniyeh. Now we will be seeing who was this Haniyeh and why and how come did he achieve such a position in Hamas and how this incident, जबकि इसको मार दिया गया है, कल रात को ही मारा गया है, और अब अगर इसको मारा ही गया है तो इसके बाद नाउ हाउ विल दिस गाजा वॉर चेंज. इवन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल लेटली सेड दैट द हमस इज लिविंग ऑन अ borrowed time. What does that statement count, and do actually Israel is playing, we all know that, a crucial role in exterminating all of the elements of Hamas in Gaza war and the destruction which is there in the Gaza and West Bank. और इतना ही नहीं, कल रात को एक और हमला किया है इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर इन दी टेरिटरी ऑफ लेबनन. तो वो भी हम देखेंगे दैट व्हाट इज ऑल दिस अबाउट. लेट्स बिगिन द डिस्कशन. तो यहाँ पे हमने देखा अभी तक कि इजराइल का जो ये प्राइम मिनिस्टर है, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था दैट द people, the leadership of Islamist militant group that is Hamas is living on a borrowed time. But once the minister, once the leader, that is the Hamas chief, Ismail Haniyeh, got killed in this foreign territory, that is the Iran. अब अगर ये वहां पे मारा ही गया है इन तेहरान, तो who was this leader and what he was playing, how he was playing a crucial role in this war. Basically, the war in Gaza, the Hamas chief who got assassinated in Iran, this assassination came into picture only once there were two statements released by the Hamas leadership and the Iranian leadership of Iranian Revolutionary Guard, जो कि ईरान की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है. Even that military organization is also termed as the terrorist organization by USA. Haniyeh, who was leading the political battle for Hamas with Arab governments, he was the key in political and diplomatic front of Hamas. How come? Because it was Haniyeh only who started discussions in the Arab world about the recognition of Hamas. अब अगर ये लीडर ही चला गया है तो इसके बाद वहां पे एक और लीडर बचता है. But the point is that how much effective leadership has Hamas lost and how much of a big win is this for Israel. So since this time there are multiple reports on different newspapers, although Israel itself said that no, we were just conducting regular checks and balances. इसके साथ साथ ही इजराइल ने there is one more attack which they did on the Hezbollah leaders in the Beirut airstrike in Lebanon, in which before 3 days from now there was an attack in Golan Heights from Hezbollah from the Lebanon side, और उस अटैक में इजराइल में 12 बच्चे मारे गए थे. एंड नाउ कम्स दी काउंटर अटैक जो कल ये ट्यूसडे को हुआ है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा धमाका सुनने को मिला था वहां पे. और देन दिस केम टू द न्यूज रिपोर्ट एजेंसीज एंड दे डिक्लेयर्ड दिस दैट इजराइल ने ये अटैक किया था ऑन वन ऑफ द हिजबुल्लाह लीडर्स. So this news comes in where there are two leaders being attacked on two sides by Israel itself. The Hamas, when we talk about Hamas,
So Hamas said that it's a treacherous Zionist raid on the residence of its leader who is इस्माइल हानिया। तो इस्माइल हानिया के ऊपर ये हमला हुआ है और ये हमला बहुत ही घातक साबित हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। अब ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया है दैट द ब्लड विल नेवर बी वेस्टेड। अब देखना ये है कि इजराइल को क्या देखने को मिलता है आगे, क्योंकि ईरान भी अब फ्यूरिएट हो चुका है, हमस भी फ्यूरिएट हो चुका है। तो दिस वॉर इज नॉट टू बी कंक्लूडेड सूनर एज पर द करंट कंडीशंस। जो अभी की कंडीशंस है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि अब ये वॉर रुकने वाला है। एंड बाय ऑल ऑफ दिस, इवन इन दी यस्टरडेज न्यूज़पेपर, कल भी हमने ये न्यूज़पेपर में देखा था कि जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला था दैट हम इनको हमला जो कर रहे हैं, ये जो हमारी लड़ाई है वो लोकल्स के लिए अगेंस्ट में नहीं है, वो अगर है तो बस उन एलिमेंट्स के अगेंस्ट में है जो इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, जो इसराइल के खिलाफ वॉर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में है। हमारी लड़ाई सिविलियंस के साथ नहीं है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए, इवन दो ही वॉज द लीडर ऑफ हमस, he was the prime leader of Hamas, still the civilians will get infuriated and the Palestinians will get infuriated because ईरान का यहाँ पे हाथ है और बाकी सारे देशों का यहाँ पे हाथ है। प्लस इसराइल का जो स्टेटमेंट आया था उसमें ये भी था दैट अरब नेशंस के साथ हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऑल टुगेदर वॉर कर पाए अरब के साथ। बट जब यहाँ पे देखा जाए तो देयर वाज ओनली वन लीडर जो अरब और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, हमस और उस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो टाइज बना रहा था, जो डिप्लोमेसी बिठा रहा था, जिसको हम शटल डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो दैट वाज दैट की लिंक इज नाउ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मूविंग फर्दर, हानिया अकेला ऐसा इंसान है जिसको मतलब बस अकेले ही नहीं मारा गया है, बट अगर आपको याद हो तो अप्रैल इसी साल 2024 में ही इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया था जिसमें हानिया के 3 बेटे थे, आउट ऑफ टोटल 5 सन्स, 3 बेटे उसके उस कार में थे और उस कार पे एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने उन तीनों को मार दिया था। तो ये भी एक न्यूज आ रही है कि, और ये 3 बेटों के साथ देयर वर 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस आल्सो। ठीक है, तो अभी तक की जो डेवलपमेंट ये है कि इसराइल हैज बीन टारगेटिंग हानिया एट इट्स प्राइम, बिकॉज इसराइल का पूरा टारगेट ही हानिया के ऊपर था। उसके बेटे भी मार दिए, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी मार दिए, एंड नाउ द हानिया story is also over. So till this date, as I said, on October 7 attack, the Israeli defense minister, he already said this thing that they are living on a borrowed time. It was back then on October 7, the attack of Hamas last year. Further, the Hania, when he was killed, he was seen with the overall leaders of Hamas and Yahya Sinwar जो अभी लीडर बचा हुआ है हमास का, because Hania had a prime position which Yahya Sinwar is yet to achieve. ठीक है, because he is now the next in position which who could lead Gaza, a potential leader of Gaza and Hamas altogether. But there is still confusion that who will lead now Gaza, because the epitome of Hania cannot be matched when it comes to the leadership. Further, जो हानिया है, हानिया के साथ, बिकॉज ही वॉज हमस रेडिकल ऑपरेशन, ही स्टार्टेड हमस रेडिकल ऑपरेशन, और उसने इस चीज को एडवोकेट किया था कि हमस को चाहिए पॉलिटिक्स में आना, और हमस को पॉलिटिक्स में लेके आया था वो 1980s के साथ। यह ये जो हानिया है ये एक्चुअल में अगर आप इसकी स्टोरी देखो तो ही बेसिकली वॉज a graduate from Gaza University back in 1980s, and then several times once he got to the position in the Hamas and the leadership of Palestine, he was several times arrested also by the Israel, and once he was arrested and then he was released in a no man's land. Once he was arrested and then he was released in a no man's land in 1992 in the southern Lebanon. But southern Lebanon में इसको छोड़ दिया गया, फिर ये वापस आया और वापस आके इसने गाजा ज्वाइन किया, गाजा में हमस को ज्वाइन किया। गाजा में हमस को ज्वाइन करने के बाद इसको तुरंत ही प्रमोशन मिला और ये मिस्टर शेख शमीद यासीन
के ऑफिस तक पहुंच गया। शेख शामिद यासीन हु इज अ ब्लाइंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हमस, ठीक है, एज यू कैन सी हिज फोटो ऑल्सो इन द बैकग्राउंड। 1997 में ये इस ऑफिस को होल्ड करता है। कौन? दिस व्हाट्स दिस याहिया, ये हानिया started to lead this office, and Sheikh Yasin, who is nearly blind, he also was killed in 2004। तो 1997 से ही आगे अब जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में थी? हानिया के हाथ में। प्लस शेख यासीन who was killed in 2004, and lately there were other attacks also post 2006 and 7 attacks। जब डिवीजन हुआ 2007 में, जब गवर्नमेंट बनी थी, 2007 की जो गवर्नमेंट बनी थी, जो पैलेस्टीन में इलेक्शंस हुए थे जिसमें पीएलओ, पाकिस्तान पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देन at that point of time it was basically a rift between the two parties. One was under Yasser Arafat, who held the position in West Bank, and the other one was with the Hamas in Gaza, and Hamas was under the leadership of Hania, ठीक है, and Hamas was under the leadership of Hania till this date. But now Hania is also gone, and along with his sons and grandsons, he is gone. Now the point is, this is now a changing, you can say a milestone when we talk about this Israel and Palestine debate. Okay, this milestone will now shape the future aspects of all of this story, and we will be seeing further developments in such case in the upcoming videos. For more such content, hit the like and share button, and I wish you all the best for your preparation. Okay, remember that you need to keep in mind the places which were in news, that is Tehran, जहां पे इसको मारा गया है, ठीक है, plus the other places also we will be discussing in other stories. Thank you, have a good day ahead.